Hello, hi guys, good evening. This is Sukanya Rana, and welcome to the session of Nikaalo Prelims. And today we'll be covering with the topic of financial markets. And guys, I hope you guys enjoyed the session which happened yesterday, because we'll be continuing with the same format. एंड जैसे हमने कल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, आज भी हम वैसे अटेम्प्ट करेंगे. एंड मेक श्योर यू गाइस आर ऑल्सो सॉल्विंग द क्वेश्चंस साइड बाय साइड. ठीक है? ओके गाइस, तो अब सेशन में करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू गाइस. सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप menti.com पे जाएं. ठीक है? एंड एंटर दिस कोड. द कोड इज 17680769. ठीक है? सो दिस इज द कोड that needs to be entered, and again go on to the menti.com and वहां से आप क्विज में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकोगे. ठीक है? सो अगेन आई वॉन्ट यू गाइज to make sure that you're going to this particular session and आप इसमें अपने आप को रजिस्टर कराएं. ठीक है? तो आज का निकालो प्रीलिम्स सेशन we'll be covering the themes which is on financial market. जैसे आप यहाँ पे schedule देख सकते हैं. This schedule has been provided to you before also. ठीक है? And again the test is mini test 9. ठीक है? तो आज का 9 डे है, एंड दैट इज वाई वी विल बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है? सो अगेन गाइस, वी विल बी गोइंग टू वी विल बी गोइंग एंड मेकिंग श्योर कि आप लोग जो ये क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, आप इस कोड को डालिए ऊपर जाके. सो आई सी कपल ऑफ पीपल who are going and getting engaged. So we have a couple of people who has joined this particular session. ठीक है? तो आप please, once I have couple number of students who have joined. ठीक है? तो we can start with the quiz. all आपको क्या करना है, menti.com पे जाइए और ये जो ऊपर कोड दिख रहा है 17680769, इसको प्लीज एंटर करिए. सो राइट नाउ I see 4 players have joined. ठीक है? And 5 players have joined right now. Guys, the more people they join, it will be fun for us. It will be good to solve the questions together. Because again I see a couple of people who are online. अगर आप बीच में करोगे तो आपकी स्कोरिंग उसमें काउंट नहीं होगी. ठीक है? तो go to the menti.com, use this particular code 17680769 so that आपकी स्कोरिंग फर्स्ट क्वेश्चन से ही काउंट हो. ठीक है? आई गेट वन मोर प्लेयर एंड देन वील स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्विज. एंड अगेन गाइज, दिस क्विज इज टाइम्ड. हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे. मेक श्योर आप 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम मत लेना टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. द क्वेश्चंस आर शॉर्ट, दे डू नॉट हैव टू मच ऑफ टाइम, बट एवरी क्वेश्चन यू विल गेट जस्ट 30 सेकेंड्स टू सॉल्व इट. ठीक है? सो मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स टाइम पे सबमिट करिए. ठीक है? सो आई थिंक गाइज, एनी वन लेफ्ट, आप बता दीजिए, बिकॉज देन आई स्टार्ट विद द क्विज. गाइज आई टेक, एंड आप बीच में भी ज्वाइन कर लेना, बट अगेन आपकी टाइमिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द टोटल स्कोर. ठीक है? तो चलो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पीस लवर, प्लीज गो हेड ज्वाइन. हाँ, आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स मिलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है? चलिए, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. So guys, the first question is coming on to your screen, and that is the questions, and now you have the option. ठीक है? So go ahead guys, what do you think is the answer? So 10 seconds are done. So I hope you guys have started this particular initiative. आपने आंसर देना शुरू कर दिया. I've got couple of answers. Go ahead.
Okay, great. So I got three answers. ठीक है, तो let's look at this particular answer. तो मेरे पास जो आंसर्स आए थे, so the question was related to bond yield. ठीक है, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू बॉन्ड यील्ड आपको ये पता था ना विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू. सो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि द मूवमेंट इन द बॉन्ड यील्ड डू नॉट डिपेंड ऑन द ट्रेंड्स. So the statement is wrong. In fact, it depends upon the trends. Second statement is also wrong क्योंकि यहाँ पे अगेन द रिलेशनशिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मैंने ये एक बार आई थिंक पहले भी आपसे डिस्कस किया था. ठीक है. थर्ड इज दैट इट वुड बेनिफिट. यस, सो इफ वी हैव if there's a drop in bond yield, that means there's going to be a rise in interest rate, and that means there's going to be more benefit to the investor. ठीक है. And the third and the fourth option, again, that is wrong, because again when you have decline in the yield, again it's going to be more and more harmful for the equity market, because money flow karega in debt market. मतलब जितना भी मनी है, if you have bond yields increasing, so money flows out and goes to another better opportunities that are out there. ठीक है. तो अब हम देखते हैं. We've got according to the board, so three people who got the score here. Sneha is at 831 points right now. So this is, I think, a good way to make your answering a bit more innovative. So I hope you guys will be more enthusiastic for the next question. तो हम लीडर बोर्ड लास्ट तक देखते हैं. ठीक है, कैसे रह रहा है. चलो guys, get ready for the next question. Here we go with the next question. Question number 2, and I hope you guys are ready. ठीक है, तो let's start with the quiz, and whoever is joining right now, guys, you can also get into the quiz. आपको सिर्फ menti.com पे जाना है and enter the code. The code is given above 17680769, and you can be part of this particular quiz. ठीक है, चलिए. So you have the question here. The second question, what is the second question? It's on capital gain tax, guys. एंड आपको स्टेटमेंट सही बताना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स. So go ahead, guys. I hope you're able to solve. Capital gain tax is something that is very much part of your answers. मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आया हुआ है. सो आई हैव गॉट 9 आंसर्स अभी तक. एंड ओके, ग्रेट. सो आई हैव गॉट कपल ऑफ करेक्ट आंसर्स. आई थिंक दिस टाइमर सिस्टम इज गुड हियर, क्योंकि आई थिंक अब आपको गूगल करने का टाइम भी नहीं मिलेगा. लाइक इफ यू नो द आंसर एंड यू मार्क इट देन एंड देयर. जैसे अगर हम थोड़ा लेड बैक वाले सिस्टम में जाते हैं तो आप आराम से जाओ एंड गूगल करो एंड यू कैन टाइप इन द आंसर. सो येस गाइस, फोर्थ, ये जो 4 लोगों ने कहा है एग्रीकल्चर इज नॉट पार्ट. बाकी सारे स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? सी लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव इज मोर देन 1, तो 2 years इज रॉन्ग देयर. ठीक है. टैक्स ऑन, इट इज नॉट ऑन परचेज, रिमेंबर इट इज ऑन सेलिंग. ठीक है. सो दैट इज वाई द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. एंड देन द लास्ट ऑप्शन, inherited property पे it is not, because it is transferred, basically it is not sold. So that is the logic here. Let's see ki what are the scoring here. So okay, 4 people got good marks, and all right, so we've got Sneha again. Very good, Sneha. You're answering the so I think your answers are going right on track. But again, Vaishnavi, Ash, Abhi and Jose, go ahead, get into the game. I think you guys can again cater and get greater marks here. ठीक है, चलो let's take next question quickly. So again, whoever is coming new, you can go and type the code and get involved in the quiz. ठीक है, तो अब third question देखते हैं हम. So guys, third question is basically on surety bonds. ठीक है, surety bonds का क्या statement सही है? You've been given 4 options. Go ahead, try it out.
सो हमारा टाइम अप होने वाला है गाइस. ऑल राइट, सो 4 पीपल हैड सेड कि श्योरिटी बॉन्ड्स जो है दे आर एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स. गाइज ऐसा नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. जो हमारे वॉट एवर द बॉन्ड्स इज गिवन आउट, इट इज नॉट गिवन आउट बाय द आरबीआई. ये डायरेक्टली द प्राइवेट प्लेयर दे आर डीलिंग विद इट. ठीक है, कोलेट्रल is not required. Again, it is not required. ठीक है, तो first and second statement are in fact wrong. Third statement is right. So whenever there's a fault, ठीक है, तो people who have been harmed because of this particular transaction, they can actually have a claim on that particular bond. ठीक है, so that was something innovative here. So guys, let's see who all of you answered very well. ठीक है, again, somebody who's coming new, you can go register on menti.com and type in this code. free है, आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो. तो 3 लोगों के राइट आंसर्स थे. I think Sneha, you're good. I think I'm impressed. Your economics is going good. Unnati also, she's also coming up. Charan, Nikita, Navik, Vaishnavi, Bell, Rishi, Ash, go ahead. You can still attempt and get some questions right. ठीक है, easily आप करो उनको. Don't panic too much when you look at those questions. ठीक है, so alright guys, I think the answer was pretty clear here. ठीक है, let's quickly move on to the next question. ठीक है, आपका एक quick revision हो रहा है basically. ठीक है, इस session के through. So I think that is a very good way to go and start with this particular question. So we are on the 50% of the questions. ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, मेक श्योर ऑल ऑफ यू आर रेडी. ठीक है, पहले क्वेश्चन आएगा, उसको जल्दी से पढ़ लेना क्योंकि उसके ऑप्शंस उसके बाद आते हैं. यू कैन गो एंड अटेम्प्ट. ठीक है, सो आई एम पुटिंग द क्वेश्चन नाउ हियर इज द क्वेश्चन. एंड again the question is on anchor investors. Now what are anchor investors? You need to know in this particular answer. ठीक है, we have 3 major options that have been provided here. What do you think is the right answer? Go ahead, everyone. And again, guys, if you attempt a bit more quickly, I think you get a bit more score. So timing is also a game here. Anchor investors, guys. Nice. So we have a majority of vote with respect to all of the above. And only I think 4 people answered it wrong. So guys, yes, you all are right. All of these 3 statements are right. ठीक है, anchor investor is something, ये वो high end investors होते हैं. These are basically those high end investors जो जिनको आईपीओ की ओपनिंग होने से, लाइक द सब्सक्रिप्शन ओपन होने से पहले उनको शेयर्स एलोकेट हो जाते हैं. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स दोज पर्टिकुलर शेयर्स एंड दोज पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, and again they are called qualified institutional buyers, and 30 days तक, ठीक है, they cannot sell the allotment, and the amount is somewhere, the idea is कि they can buy out the amount that is available out there in the company and उसको वो खरीद सकते हैं. ठीक है, so ये तीनों ऑप्शन सही है. and let's look कि I think a lot of people answered this question very nicely. So we've got a lot of marks that are added on here. So yes, good. I see Josh and Ash also coming up. Sneha is still in the lead. Sharan is there. Unnati, Navik is also come up above. Vaishnavi and Bell, go ahead, take the answers and थोड़ा properly read करके get your scores high. ठीक है, चलो guys, quickly, if you have any doubts, ठीक है, आप chat box में डालो, नहीं तो we'll continue with the quiz process, ताकि in a very quick procession आपके ये answers solve हो जाए. Maximum question are solved in minimum time. ठीक है, so let's take the 5th question. So I hope all of you are ready to answer this particular question. ठीक है, okay guys, so the question, this particular question is on the concept of circular economy. ठीक है, अच्छा, be very careful, it is not an essential component. Be very careful about that. ठीक है,
I'm reading it out to you before only because again, otherwise it's a very timed question, so there's a high tendency that you might miss out this not here. ठीक है, तो नॉट है, ध्यान से पढ़ो तीनों चारों ऑप्शन एंड नॉट वाले को रजिस्टर करो यहाँ पर. ठीक है, 5 more seconds to go and I've got 12 answers with me, so I think this answer seemed a bit right. Okay guys, I think some of you did got confused. I said not होना चाहिए क्योंकि देखो polluter pay principle and extended producer responsibility both are basically aiming at getting your waste recycled or taking the responsibility of whatever waste is going. ठीक है, इवन रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी उसी सेंस में काम करता है. ठीक है, ये जो है ना, वाइडन द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड द नेचुरल इकोसिस्टम साइकिल. हाउ इज इट वाइडनिंग? हाउ इज द सर्कुलर इकोनॉमी वाइडनिंग दिस प्रोडक्शन गैप? ऑब्वियसली इट्स ब्रिंगिंग देम टुगेदर. ठीक है, वॉट एवर इज नेचुरली और इकोसिस्टम वाइज कंड्यूसिव, दैट इज वॉट वी आर प्रोड्यूसिंग. ठीक है, so this gap is actually reducing and it is becoming more and more eco-friendly. So that was the logic here, and we had a bit more answers. I think मुझे लगा be very careful, जैसे अब अगर not होगा तो I'll say it in the answer, but again you guys also keep that in mind. So we had 3 people, Josh, Ash and Navik, who answered this particular answer properly, and that is why. Okay, great. So Navik got on to the second position, but Sneha is still on the first. Okay, chalo, let's take another question here. Quickly, let's move on to the next question. अच्छा, ये जो concepts आपको नहीं आ रहे, make sure you revise them again also. ठीक है? So the next 6th question. So the 6th question is on what, guys? I'm pressing the enter button. ठीक है, anybody who wants to register again for this particular program, what they can do is again go to menti.com and type in this particular code. ठीक है, what is the question here on? I think this question is on public private partnership appraisal committee. So this was a news. ठीक है, and you have to tell me whether the first 2 statements are right, they are wrong, both of them are correct, individually they are correct, or none of them are correct. ठीक है, so this particular committee was there in your news, and that is why it is there. ठीक है, so I hope you guys have read it through. ठीक है, okay, 2 3 4 seconds to go and I have my answers here. Okay, so we had both of them. A lot of people answered both of them are correct. How is it correct, guys? If you go and revise your current affair modules here, na, the first statement is not correct because again it is not the cabinet secretary, it is the secretary of Department of Economic Affairs. ठीक है, so that person is actually responsible, not the cabinet secretary. ठीक है, and second is it says it cannot approve projects. It cannot. ठीक है, not लिखा हुआ है, but it can actually approve more than 100 crore rupees. ठीक है, not costing नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. So both of the statement are actually wrong here. ठीक है, I see that. All right, great. 4 people have answered correctly. Let's see who are these 4 people. We've got Charan, Unnati, Ash, Josh and Arun who answered this particular question correctly. Okay, cool. Now I think Charan, you just need 50 more points to get ahead here. Right, so I see a lot of good enthusiasm for this particular initiative. Chalo guys, let's take the second last question. Again, it's a very quick initiative so that you can revise a lot of your questions with more and more less time. And if you like this initiative, I think कल हमने एक अलग format try किया था. Today we tried another format. Whichever format you like more, आप comment section में ये लिखिए and from tomorrow we'll keep that format. ठीक है, अगर आपको कल वाला फॉर्मेट वेयर वी हैड दैट बार कोड एंड इट यूज्ड टू टेल व्हाट परसेंट ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग व्हिच आंसर, डिड यू लाइक दैट? सो राइट द फर्स्ट फॉर्मेट, एंड इफ यू लाइक टुडेज फॉर्मेट वेयर इट्स लाइक अ लीडर बोर्ड काइंड ऑफ अ थिंग, तो राइट द सेकंड फॉर्मेट. फिर कल से वील बी फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट. ठीक है, चलो लेट्स टेक द 7th क्वेश्चन हियर. 7th question again, hope you guys are ready. 7th question, here is it.
So the question is on new pension scheme, NPS, and you have to identify which statement is not correct with respect to it. Be very careful, it says not correct. ठीक है? So what do you think, guys? What is the answer here? एनपीएस देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सो इट्स नॉट समथिंग दैट कि जो आप नहीं कर सकते या आपको नहीं आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. ठीक है. 12 more seconds. Go ahead, guys. All right. So I had couple of answers which had come into play here. तो हमारे पास 5 आंसर थे जो सही गए हैं, none of the above, because again all of these it says it's not correct. ठीक है. So all of these statement are actually correct. ठीक है. First and second is देखो is something very very easy. ठीक है. Unnati is saying, for me, question opens before you go to the next question. How can that happen, Unnati? I think it opens simultaneously. I'm not sure. Maybe you can log into options clearly are not visible. Ma'am, we have to write answer it before only, and we have to answer it before only. Options are not clearly visible. We have to Unnati is saying that we have to answer it before only. Yes, Unnati, it's like no, you don't have to answer the questions before. It comes as I present the sheet. Okay, it's a live quiz. So it opens as soon as see guys, okay, why is it opening before is that there is a 10-second lag with respect to the YouTube video and the quiz. So when I open the slide at that point of time, the quiz gives you the question exactly at that point of time, but the video comes a bit later. So that lag thing is something that we cannot टैकल हियर, बट आई थिंक आप आंसर जो आपको 30 सेकेंड मिल रहे हैं वो उतने ही मिल रहे हैं क्विज में. ठीक है. सो देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद इट, एंड समबडी सेइंग दैट द ऑप्शंस आर नॉट क्लियरली विजिबल. ठीक है. चौहान, व्हाट वी कैन डू इज टुमारो से वी कैन कीप द फॉन्ट अ बिट बिगर. ठीक है. आज तो द फॉन्ट वाज प्रेजेंटेड बाय दिस ओनली. ठीक है. तो अभी स्लाइड्स आर लाइक दिस ओनली, बट अगर आप ऑप्शन लाइक क्विज वाले फॉर्मेट से खोलोगे तो ऑप्शन आर क्लियरली विजिबल देयर. ठीक है. सो गाइज लेट्स लुक कि किन 5 लोगों ने आंसर किया. अच्छा, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. एनपीएस से रिलेटेड ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, and we got okay, cool. Vaishnavi, finally she answered it correct. Great. Santosh also. And okay, so we have couple of changes here. Ash has come on the 3rd position. Nevik is there on the 4th. Then we have Ankit, Jose, Unnati. All right, cool. Guys, I think Santosh is somebody who's just come up here only abhi. ग्रेट. चलो फिर चलो अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फॉर द डे. ठीक है. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन ऑन? ठीक है. द क्वेश्चन इज ऑन which India's green hydrogen mobility initiative has been set up in which UTs? Again, this is like a question on current affairs. ठीक है. current affairs related question है, and I hope you've done your module properly. ठीक है. आपने अपना मॉड्यूल प्रॉपरली किया है तो आपको ये क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स वाला. ठीक है. बेसिकली यू हैव टू टेल मी इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट. ठीक है. कहाँ पे सेटअप हुआ है? ओके. So I got a lot of answers here. Ladakh, which is the right answer. So maximum support for there. ठीक है. Andamans is wrong, guys. Delhi is wrong. So this was a bit factual question. But again, prelims है तो आपको factual ideas भी उसमें cover करने पड़ेंगे. ठीक है. तो let's see कि what was your score here. Final scores आपका किस direction में गया है. Okay, so I think Sneha is still gonna be in lead. So Sneha comes
First year, great, Sneha. So congratulations. Like our first initiative, and I think you answered well. Like the initial lead that you got with respect to the first answers, that got you to the first position. On the second position, we've got Ankit, then we've Charan, then we've got Ash, Ankit, Josh, Unnati, Navik. One good point is nobody is at zero, so that is very very good thing here. Nikita was there, then Vaishnavi and Santosh. So guys, it's all right even if you're not coming first, second, third, but the idea is the process is something will give you a good check on your preparation. Okay, we are bringing you some set of questions that you can practice in half an hour to 40 minutes quickly. These questions is something that you can do. Okay, and that will prepare you for some portions of your prelims preparation. ठीक है, तो ये निकालो prelims का एक part है. And like I said guys, Charan is actually very happy that he's on second position. Great, Charan. I think I think Sneha should also put her remarks here. Okay, Joe, peace lover, Jose is here. Jose, I think you also did it right. I did a mistake in not word, ma'am. Okay, Charan. So I think you could have been here in the top lead. ठीक है, ग्रेट. तो कल देखते हैं. कल मेक श्योर यू रीड द आंसर्स प्रॉपरली. अच्छा, आप मुझे बता देना जस्ट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू गाइस लाइक्ड इट, विच फॉर्मेट शुड वी फॉलो. शुड वी फॉलो द लीडर बोर्ड फॉर्मेट और द फॉर्मेट दैट वी डिड येस्टरडे, दैट इज द परसेंटेज फॉर्मेट. ठीक है, आप कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिए, आप अभी लाइव चैट में लिख दीजिए वट एवर यू थिंक. स्नेहा आई सेड थैंक यू मैम. सो ग्रेट स्नेहा, good. I think your preparation is going on track. Some questions were tricky here, but still you went through well. Okay, so guys, that was Nikaalo initiative for today. Tomorrow we'll be back again at same time 7 p.m. and we'll be giving you such questions. ठीक है, Sneha is saying this format is good. I think Sneha, you will be supporting this format because you topped it this time. Acha, Navneet is saying all the best, Charan, for tomorrow. Navneet, I think tomorrow you should also be part of this quiz. I think Navik, I am not sure, was that you? Nikita is saying this format. Unnati is saying this format. प्रशांत इज सेइंग मैम इंग्लिश राइटिंग कैसे सही किया जाए. प्रशांत, इंग्लिश राइटिंग के लिए तो अभी थोड़ा ये मतलब प्रीलिम से थोड़ा आउट हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन. शरण इज ऑल्सो सेइंग ठीक है गाइज, सो वी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. तो कल मिलते हैं इसी फॉर्मेट में एंड विल गेट यू गुड एम्पल ऑफ क्वेश्चंस. यस, टुमारो इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स. ठीक है, हाँ, तो नाविक वॉज ऑल्सो देयर. सो एल क्लाउड, आई थिंक एल क्लाउड यू आर लेट टूडे. के क्लाउड, I think you should have been a bit earlier क्योंकि आज के सेशन में we enjoyed a bit more. I think I like that scoring वाला system. It gave a new touch to it. ठीक है, चलो guys, फिर कल मिलते हैं. इकोनॉमिक्स का सेशन होगा. ठीक है, and we'll be here at 7 o'clock and we'll be attempting same level of questions. And if you have your friends also जिनको आपको बताना है to join this particular session, उनको भी बोलो. ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, just 30 to 40 minutes. And quickly we'll wrap up good amount of questions. ठीक है, peace lover, let's do 15 to 20 questions. Yeah, sure. जितना भी उस टाइम फ्रेम में हमारा कवर होता है 30 to 40 में, we'll get as many questions tomorrow. ठीक है, great guys. चलो फिर कल मिलते हैं. Thank you so much for attending today's session. Good participation and obviously congratulations Sneha for topping today's session. Okay guys, good night, take care and see you tomorrow.